developed the hotspots. They are biodiversity rich region. और हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो क्राइटेरिया यूटिलाइज करते हैं. सो बेसिकली the two criteria they are used for identifying the hotspots. Now first one, that is the number of endemic species. Number of endemic species means जो डिग्री ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होंगी या डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा वो हाई होगा. इसके साथ साथ the second criteria, that is the degree of threat, and this degree of threat is calculated, it is estimated with respect to the habitat loss. Right? ये दो मेन क्राइटेरियाज हैं हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग द हॉटस्पॉट, बट इसके साथ साथ कुछ और क्राइटेरियाज भी यूज किए जाते हैं. दैट इज द स्पीशीज रिचनेस ऑफ दैट एरिया, देन द डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. नाउ अर्लियर द नंबर ऑफ द हॉटस्पॉट्स which were identified on the earth, they were 25. Yes, ये अर्लियर नंबर मैं बता रही हूँ, बट प्रेजेंटली द नंबर ऑफ द हॉटस्पॉट्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट इज 34. ये जो 34 हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से 16 हॉटस्पॉट्स दे आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिक्स. They are in the tropics, and in the tropics 15 they are in the mainland and one is in the island. And if we talk about India, you know that India is biodiversity rich region, और इंडिया के अंदर प्रेजेंट है 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. इन हॉटस्पॉट्स को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. राइट?